magnetic force acting between two current carrying parallel wire। यहाँ दो वायर है अपने पास PQ और RS, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, एक में I1 और दूसरे में I2 करंट है। दोनों के बीच की डिस्टेंस पैरेलल वायर की D है। PQ वायर में I1 करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है थंब रूल से कैलकुलेट करेंगे तो लेफ्ट साइड वायर के जो है आउटवर्ड रहेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और राइट साइड अगर देखेंगे तो इनवर्ट रहेगी। PQ वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1 है जिसमें RS वायर रखा हुआ है और I2 करंट उसमें फ्लो हो रही है, तो इस पे फोर्स जो लगेगा वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से कैलकुलेट करेंगे। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन है वो फोर्स की PQ की तरफ रहेगी और फोर्स जो है वो F21 इस पर लगेगा। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हम लगाएंगे। फर्स्ट फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, सेकंड फिंगर जो है वो करंट की डायरेक्शन में सेट करेंगे, तो थंब जो है वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फर्स्ट फिंगर और जो है सेकंड फिंगर जो है वो करंट की डायरेक्शन में सेट करने पर थंब जो है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को बताता है। तो यहाँ मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन जो है वो PQ वायर की तरफ है, तो PQ वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1 जो है magnetic field due to PQ wire is given by V1 equals to mu node। तो RS वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड B1 है और ये मैग्नेटिक फील्ड B1 जो है PQ वायर की वजह से, तो म्यू नोड I1 अपॉन 2 पाई D। फाइनाइट लेंथ के वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड ये होता है। मैग्नेटिक फोर्स on RS wire in magnetic field B1 is given by the force on wire RS in B1 magnetic field is given by F21 I2 L length of wire B1 magnetic field and sin theta। Sin theta is 90, so F21 L is the length of wire, so F21 becomes I2L B1। This is equation first। Now value of B1 magnetic field substitute in equation first। So F21 becomes I2L B1 is mu node I1 upon 2 pi D। So F21 becomes L mu node I1 upon I2 upon 2 pi D। Magnetic force on wire at per unit length is given by F21 upon L mu node I1 I2 upon 2 pi D।
Now the force on PQ wire in magnetic field of RS wire by using Newton's third law. Force on PQ works equal and in opposite direction. Now we calculate the value of force F12 by using Newton's third law. Similarly, force on PQ wire in B2 magnetic field due to RS wire. According to the Newton's law, action force equal and opposite reaction force. So F21 equal to F12 in magnitude. So F12 becomes mu naught I1 I2 upon 2 pi d into L. Force on wire PQ at per unit length is given by F21 F12 upon L equals to mu naught I1 I2 upon 2 pi d. This is the equation third. Now equation third and equation 2 are equal. So per unit length force also equal. F21 and F12 upon L both are equal to mu naught I1 I2 upon 2 pi d. This is the per unit length force acting between two parallel wire. Now the definition of 1 ampere. 1 ampere. If D is 1 meter, I1 I2 equals to 1 ampere, then force in per unit length becomes mu naught upon 2 pi. I1 I2 is 1 ampere. Mu naught equals to 4 pi into 10 to the power minus 7. I1 I2 is 1 ampere. 2 pi into D is 1. 2 pi is cancelled out with 4 pi. So force per unit length is 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter. This is the force acting when 1 ampere current flow in parallel wire. Now the definition of 1 ampere is if two wires are placed apart at 1 meter distance
parallel to each other, and the force acting between them is 2 into 10 की power minus 7 Newton per meter. Then current will flow in parallel wire is 1 ampere. Or 1 ampere. This is the definition of 1 ampere. Now, current or flow anti-parallel, then force between them acts in this manner. So when current flow in opposite direction, then direction of force calculate by using the Fleming's left hand rule. So current is I1 in PQ and current is I2 in RS. Both current are in opposite direction. So magnetic field of due to the PQ wire is B1. Magnetic field direction for PQ wire and right side is inward and in left side is outward. The direction of force calculated by using the Fleming's left hand rule. So direction of force F12 is in left side and the magnetic force on RS wire in B1 magnetic field also in right side of RS wire.